From the rhythmic movement of the loom to the intricate patterns that tell the stories of generations, handloom remains deeply woven into the cultural fabric of Arunachal Pradesh. On August 7th, the country observed the National Handloom Day, commemorating the historic Swadeshi movement of 1905 and celebrating India's rich indigenous textile tradition. In the heart of Itanagar, the spirit of tradition took center stage today, as the Department of Textile and Handicrafts, Government of Arunachal Pradesh hosted the 12th National Handloom Day celebration. मेरा नाम छेंदन गोइबा, मैं मेंबर टाइप का हूँ। मेरा नाम तेचियाना है, निशी ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कमन्या तासी, हम गालो ट्राइब से बिलोंग करता है। मेरा नाम लेकी चोजम है, मैं मोन्पा ट्राइब से हूँ। मेरा नाम अपू यापी है, हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट का है, ट्राइब हम लोग आदिबोरी है और गचंग बस्ती से हम लोग आया है ना। I am Jonlen Songting Bo. I belong to Wagun Ponthai village, Tangsa tribe, Changlang district. मेरा नाम याकी रही है, मैं तागिन हूँ, अपर सुबनसिरों से बिलोंग करते हैं, दापरिजे से। मेरा नाम है स्वेगन पंसा और आज हम लोग की नेशनल हैंडलूम डे एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए हम लोग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वांचो ट्राइब वहाँ से आया हुआ है। मेरा नाम हाजरीना, हम अपतनी ट्राइब से हूँ, तो हम जीरो से है, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो से। तो मेरा ये काम जो ये 15 साल हो गया ये सब काम किया वाला, तो हम ये मेरा जिखे बनाते हैं अपना जिलंग और ये क्या बोलते हैं तारू पिंगा हम बनाते हैं यहाँ पे। तो आज इसको शो करने आए हम और मेरा ये 2 साल का मेहनत है ये सब। आज अच्छा लगा, आज हमको यहाँ में बुला के पूरा सबको हम दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। The inaugural function was graced by Chief Minister Shri Pema Khandu as chief guest, along with Textile and Handicrafts Minister Shri Nyato Dukam and advisor Dr. Mohesh Chai. The event brought together weavers and artisans from across the state, celebrating the legacy of Arunachal's handloom heritage, under the theme My Handloom, My Pride. कैसे पता चलता है ओरिजिनल लोग इसको तो हम लोग तो पहले से तो ये ढंग से बना जाता है। On behalf of the Department of Textile and Handicrafts, I am privileged to extend a warm welcome to all of you for joining us in celebrating the 12th National Handloom Day. The occasion serves as a tribute to the timeless artistry of our handloom and handicraft tradition and the exceptional skills of our weavers and artisans. The objective of observing National Handloom Day is twofold. It raises public awareness about the importance of this time-honored industry and the profound contribution to the nation's socio-economic development. And it also serves to remind us to cherish and safeguard our handloom heritage, empowering our weavers and artisans by creating greater opportunities and improving livelihood. In the context of handloom craftsmanship, Arunachal Pradesh holds a unique position. The state's rich cultural tapestry is exquisitely represented through the traditional art
of weaving of each tribe. And Arunachal has tremendous potential to emerge as a notable partner in the nation's handloom sector. Towards this end, the Textile and Handicraft Department has undertaken several initiatives. And in the last few years, under the benevolence of Honorable CM and direction and leadership of the Honorable Ministers and the people at the helm of affairs, the department has seen a surge in infrastructure creation. The new AP Arunachal Pradesh State Handloom and Handicrafts Emporium is under construction. So are 3 Arun Shri Unity malls across the 3 east, west and central zones. There are the 2 new handloom marketing complexes, a handloom park, and a handmade paper producing unit. And there has also been massive upgradation of existing craft centers and emporiums and other assets of the department. This, of course, has not totally addressed the issue that we are facing in terms of degraded infrastructure, but to a great extent it has helped. The department has also organized and participated in numerous exhibitions, melas, and conducted trainings and exposure tours to export houses and craft villages to teach officers, to expose officers as well as the self-help groups and our weavers and artisans to greater opportunities outside the state. An MOU has also been signed with the Export Promotion Council for Handicrafts, EPCH, for collaboration in making the state market ready for both domestic and export markets. However, one major concern has been how to scale up production without compromising the traditional and handmade nature of the products. The department has hence made an effort to bring in some mechanization, restricted largely to the raw material preparation and pre-production operations to speed up the process and reduce drudgery, while at the same time retaining the intrinsic handcrafted status of the item. Bamboo baskets, for example, continue to be made by hand. However, the raw materials will be prepared now using bamboo splitter machines, which has been procured recently, and sundry other small mechanized tools. The handmade paper pulp for Monshugu paper is beaten by mechanized methods, but paper pulling, the actual act of creating the paper sheet, continues to be done manually. At the same time, the inadequacy of production volume and the lack of consistent quality are major deterrents in domestic and export market readiness. To scale up production with consistency in quality, the department has introduced usage of jacquard looms. You will have seen an example outside where the designs are not picked out by hand, but punched onto a card, and which is then fitted into the jacquard machine, and the designs come out woven automatically into the warp and weft of the cloth itself. And we have also shown you an example of a computer-aided knitting machine, reducing labor cost. This has been also taken up in tailoring units, embroidery units, which are done by through the computer, through a program fitted into the computer, and it has greatly reduced our dependence on labor force. During the ceremony, Chief Minister Pema Khandu launched the official website of the Department of Textiles and Handicrafts, Government of Arunachal Pradesh, along with the state's new artisan data bank. The digital initiative is aimed at bringing the state's vast artisan community onto a common platform, strengthening their connection with government support, modern market, and new opportunities. The Artisan Data Bank is expected to provide a systematic digital record of artisans and their skills, helping the department better identify, support,
and connect them with schemes, training, marketing opportunities, and wider markets. Today marks a proud milestone for the Directorate of Sericulture, Government of Arunachal Pradesh, as we launch Ati, the Arunachal honey. Ati is more than a brand. It is a reflection of the purity, quality, and rich natural heritage of our state. It stands for a commitment to producing safe, authentic, and sustainably harvested honey, while creating meaningful livelihood opportunities for rural communities across Arunachal Pradesh. The celebration then turned to honor the people whose skill and imagination continue to shape Arunachal's distinctive handloom and handicraft traditions. This year, 6 weavers and craftspersons from across the state were felicitated with the State Awards for Excellence in their work. The first prize goes to Srimati Sancha Kamwa, born on 7 June 1980, hailing from Lahu village of Tirap district, wife of Sri Lewang Kamwa, Nokte community. She is associated with weaving activities for the past 25 years. She makes Nokte shawls, mufflers, Nokte ladies' wear, cushion covers, bags, ties, etc. Her motive is to preserve the weaving tradition of the society and to earn livelihood for her family. She uses cotton yarn, acrylic yarn, and wool. Srimati Nukom Songteng, born on 2nd January 1989, wife of Toteng Songteng, from Wagun Puntai village, Tangsa community, Changnam district. She is weaving for nearly 16 years now. She weaves lungi, female traditional dress, coat, scarf, etc. Her motive is to preserve the Tangsa textile and to earn her livelihood. A big round of applause for Srimati Nukam Songteng. The 3rd prize winner, Miss Nyalu Minin, daughter of Aminin, born on 1st January 1995, resident of Wanyang village, Hawaii, Anjo. She is associated with weaving activities for many years now. She weaves mismi gale, shawl, bags, etc. And she uses cotton, acrylic, and wool. She does weaving to preserve the weaving design of the Mismi tribes and to earn her livelihoods. Thank you very much. To the first prize winner, Srimati Pangcha Aran, born on 7th January 1992, wife of Namlang Pangka, resident of Kaimai village, Tirap district, Nokte community. She has been associated with beads ornament making since childhood. She uses glass beads for making beads ornaments necklace, Nokte spears, earrings, bracelets, bags, keychains, beads designs on dresses. She has taken up this activity to support her family and to become economically independent while preserving the heritage. A big round of applause for once again for Miss Srimati Pangcha Aran. She is Srimati Sang Chajam, born on 1st January 1971, wife of Liksaring, hailing from Nyakmudang village of West Kameng district, Montpa community. She makes cape called Chit Pajumo, Brokpa bags from yak, fur, and Montpa traditional shoes, etc. from leather. She takes up this activity to support her family and to become independent economically. Ladies and gentlemen, the 3rd prize winner is Chetan Goiba, born on 5th June 1992, son of Choiling Goiba, resident of Page Mechuka of Shiomit district. Thank you very much. The ceremony then moved from honor to support, with Samarth certificates and yarn passbooks distributed to weavers and artisans. Samarth certificates recognize textile sector skill development, while yarn passbooks help weavers access and keep track of their yarn requirements through the government-supported supply system. Together, these measures strengthen the support behind every loom, helping artisans carry their skills, livelihood, and craft forward. ये 12वीं जो
नेशनल हैंडलूम डे है, जिसके वजह से हमारे जो बुनकर हैं, जो गांव-गांव में हमारे जो बुनकर लोग हैं, उन लोगों को एक एनकरेजमेंट दिया है, प्रोत्साहित किया है। और इतिहास बताते हैं कि 1905 में हमारे भारत के लोग एक मुहिम चलाया, जिससे विदेशी जो कपड़े हैं उसको बहिष्कार करने का एक मुहिम चलाया था। मुहिम चला के हमारा जो बुनकर हैं उन लोगों को इस तरह से प्रोत्साहित किया कि वो अपना जो कपड़े हैं वो बनाते रहें और अपने ही कपड़े पहने, इस मुहिम को चलाया। और मैं अपना जो बुनकर लोग हैं जो हैंडलूम से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को भी एश्योर करता हूँ, आप लोगों का जो फ्यूचर है वो भी उज्जवल है, बिल्कुल उज्जवल है। आप बिल्कुल चिंता न करें, सरकार आपके साथ है, आपको लेके चलेंगे सरकार। और आप ही हो जो एक हम लोगों का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको असल में आप लोग ही हैं जो इसको बनाए रखा हुआ है। यहाँ तो हम लोग बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं कि अपना कल्चर को मेंटेन करना है, अपना लैंग्वेज को मेंटेन रखना है, अपना इसको कल्चर को प्रिजर्व करना है, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लोग कहते हैं, लेकिन करते आप लोग हैं। आप लोग हैं जो ये कल्चर को अब आज तक बनाए रखा है, ट्रेडिशन को मेंटेन किया है। तो मैं तहे दिल से आप लोगों को मैं शुक्रिया करता हूँ। इस नेशनल हैंडलूम डे को डिक्लेयर करने का मेन जो प्रेरणा जो मिला है, आप सबको पता है कि हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो अपना स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था वे बैक इन 1905, ताकि अपने भारत के जितने भी जो प्रोडक्ट्स है उसको ऊपर में हम लोगों को उसको ख़रीदना चाहिए, उसको हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, बल्कि जितने भी जो फॉरेन जो कपड़ा है उसको हम लोग यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये एक स्वदेशी मूवमेंट का एक जो 1905 में जो शुरुआत हुआ है, उसी को ही गति देते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल पहले इस नेशनल हैंडलूम डे का इसका शुरुआत किया है। और पीएम मोदी साहब आने के बाद में खास करके जो हमारा ये नेग्लेक्टेड जो सेक्टर था, चाहे वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल्स, उसको उजागर करने में विभिन्न जो अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से आज पूरे देश भर में हमारे खास करके जितने भी जो आर्टिसंस है, जो टेक्सटाइल्स में जो काम कर रहे हैं, वो पूरा अभी एक्टिवेट होके अपने अपने कम्युनिटी के जो पहचान है, अपने अपने ट्राइब्स का जो पहचान है, उसको अपने ही राज्य में और देश भर में और इवन इंटरनेशनल मार्केट तक में भी ले जाने में बहुत ही सफलता हुआ है। और इस बार के जो नेशनल हैंडलूम डे का जो थीम है, वेविंग इनोवेशंस इनटू ट्रेडिशंस, वेविंग मेमोरीज, सेलिब्रेटिंग हेरिटेज। तो इस बार का जो थीम जो है, मैं समझता हूँ कि खास करके अरुणाचल के दृष्टि से देखा जाने से ये बहुत ही अच्छा थीम है। अरुणाचल प्रदेश में हम कुल मिला के बहुत सारा जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं और सभी जनजाति का अपने अलग अलग संस्कृति अलग, परंपरा अलग, कल्चर अलग, ट्रेडिशन अपना जो हमारा जो ड्रेस होता है, जो आप ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है वो पूरा अलग होता है। सो इस बार का जो थीम है अरुणाचल प्रदेश के लिए ये बहुत ही अच्छा एक थीम है। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम को मैं बधाई देता हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, सेक्रेटरी, सभी डायरेक्टर्स, सभी ऑफिसर्स और सभी स्टाफ्स को कि आप लोग ने इस बार का जो इवेंट है बहुत ही अच्छे प्रकार से ऑर्गेनाइज़ किया। सो जब हम लोग टेक्सटाइल्स और हैंडलूम का जब बात करते हैं, मैं थोड़ा देर पहले ऑनरेबल मिनिस्टर, एडवाइज़र और सेक्रेटरी मैडम से भी मैं डिस्कस कर रहा था, इसमें हमारा जो सेरिकल्चर जो विंग है डिपार्टमेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जितने भी जो अरुणाचल में जो एमिनेंट जो डिज़ाइनर्स हैं, उनके साथ में जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा खास करके जो सिल्क को लेके
कि अरुणाचल में क्वालिटी सिल्क जो नहीं मिलने का कारण से यहाँ पे वो लोग बाहर स्टेट से वो लोग सिल्क मंगाते हैं बोल के बताया। सो अपना यहाँ पे स्टेट में अभी सेरिकल्चर डिपार्टमेंट को और भी स्ट्रेंथनिंग करना ये थोड़ा सा आवश्यक समझा। सेरिकल्चर जो है क्योंकि अपना बहुत ही सदियों से हम लोगों का जो एरी जो है हम लोग पहन के आया हुआ है और ये एरी कपड़ा जो है अपना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट को एक्सपांशन करने के लिए और अरुणाचल प्रदेश का जो जोग्राफिकली जो हमारे यहाँ पे जो वेरियस टेम्परेट जो जोन है वो हमारा जितने भी जो 4 जो सिल्क है, एरी सिल्क हो गया, मुगा सिल्क हो गया, उसके बाद फिर मलबरी सिल्क, इसके बाद ओक तसर सिल्क, ये चारों जो सिल्क के लिए अरुणाचल प्रदेश का एटमॉस्फेयर काफ़ी कंडूसिव है। और इसको हम लोग सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का माध्यम से इसको आने वाला दिनों में और भी प्रमोट करेंगे। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट राज्य सरकार की ओर से चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग को हमारे ओर से इंस्ट्रक्शंस भी दिया जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप्स प्रोग्राम है कुल मिला के अभी तक 1500 फार्मर्स को इसको ऊपर में हम लोग ने बेनिफिट पहुंचाया है अपना एरी और मुगा जो प्लांटेशन जो है उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, और जो सिल्क वार्म का रेयरिंग हाउस है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो एसेंशियल जो सेरिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट देने के लिए। सो इस प्रकार से काफ़ी सारा सपोर्ट दिया गया है। और आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है उसका ज़रिए से भी आने वाला दिनों में 50% सब्सिडी ऑन सिल्क यार्न भी दिया जाएंगे। सो इस प्रकार से बहुत सारा इंटरवेंशंस है राज्य सरकार का। सो आने वाला दिनों में इन सारा जो राज्य सरकार का पॉलिसीज़, भारत सरकार का पॉलिसीज़ को देखते हुए आप लोगों को उसको पूरा इस्तेमाल करना है। सो एक बार फिर मैं इस 12th नेशनल हैंडलूम डे के शुभ अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता के ओर से, खास करके हमारा आर्टिसंस, वेवर्स, हमारा फैशन डिज़ाइनर्स, हमारे रिलेटेड जितने भी जो बिजनेस एंटरप्रेनर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं मैं कन्वे करता हूं, और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय अरुणाचल। From the hands of its weavers to markets beyond its borders, Arunachal's handloom carries with it a story of heritage, resilience and hope. And as tradition meets innovation, these timeline threads are weaving a new future for the state.